Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 4. Chapter is Heredity and Genetics. It is biology 10th class. And today in this chapter my topic is methods of tracing evolutionary relationship. If there takes place evolution in living organisms, that means every living organisms descend with new modifications from the pre-existing organisms. This is the evolution. Now, what are the various methods which could be evidences for the evolution? To understand the concept of evolution, what are the various methods as the evidences that tell us about there is a evolutionary relationship? Evolutionary relationship कैसे है इनमें? When there are different species of organisms, different species of organism, how they are related to each other, that there are sometimes they share the characteristics which proves us that they have been existing from the pre-existing species, slightly with some verifications, with some modifications, they come in a new time. That means here to explain those methods, those evidences which helps us in which helps us in making the evolutionary relationship. Yes, there is the evolution, there take place the evolution of different organisms from their pre-existing species, and there is of course variation among them. But if they look like that species, that organism look today looks different, but it is variations that have accumulated with a long period of time, and but truly it has been descent from a pre-existing species. Here is the I have some part, इसमें हम parts में पढ़ेंगे part A, part B और part C, D, E, F. और हमें कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐसा कुछ है, अगर हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं, इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इफ देयर इज अ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी, इफ देयर इज अ टैक्सोनॉमी, देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी मेक द क्लासिफिकेशन ऑफ diversity of living organisms in a groups, and those groups are closely related. There is some relations, and what type of relation those groups, those different groups is, that is an evolutionary relationship. There is an evolutionary relationship. Because of the evolutionary relationship, we make a system of classification known as the taxonomy of those living organisms on the basis of their evolution, what common characters they are sharing to each other. If living organisms, if different groups of living organisms are sharing more common characteristics, then we can say they have common ancestry, they have a common origin, and it is a evolution. That there are the various characters, there are the various connecting links. On the basis we say there is the evolution, that means new organism originate from its pre-existing organisms. Let us we see here the first A part में evolution and classification. तो यहाँ पे हमारा इसमें रहेगा A part में evolution, how the concept of evolution help us in the classification. यहाँ पे आपको नहीं लगता है, जब भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं हम देखते हैं the
there are more than two different groups of organisms. They share some common characteristics. With the help of those common characteristics, we believe then that they have a common origin. They have a common existence, and in this way there is a evolution. There take place an evolution. That means evolution and classification. Evolution and classification. इस जरिए से हमें बताना चाहता हूं कि देयर इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बाय स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को व्हेन वी स्टडी दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इट इज वन ऑफ द मेथड. मैंने बताया टॉपिक मेरा है मेथड्स ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. दैट मीन्स वन ऑफ द मेथड इज दैट evolution and classification. We make the classification of diverse living organisms. जो हमारे पास different species of living organisms है, हम उनको कैसे classify करते हैं? We classify them by a common characteristics. The common characteristics they are sharing to each others, so they help in the classification. जब हम एक classification पढ़ते हैं of a particular group of organisms, we understand that the concept of evolution. That means here we by this method I will get the evolutionary relationship. There is evolutionary relationship here. I can say here the evolutionary relation that different living organisms live. They can be determined by the methodology of classification. And how we make the classification. Classification कैसे किया जाता है? It is classified on the basis of a set of characteristics. On the basis of set of characteristics that make the characteristics that are more common, and we get a group. हमें ऐसा जो हमें classification में हम देखते हैं, we classify the organism on the basis of set of characteristics which are very common to them, which are more common in them. They make a group, and the they make a group, a large group of organisms which share a common characteristics to each other. Then हमने देखा कि ये जो characteristics वो they are sharing their characteristics on the basis of set of characteristics जिनके basis पे हमने उनको classify किया है, और वो characteristics prove होता है यहाँ पे. They are the ancestral characteristics. We have ancestral characteristics. On the basis of ancestral characteristics, or sometimes we know the basic characteristics. Basic characteristics or ESTICS or basic characteristics RIS. सॉरी, यहाँ पे basic characteristics पे हम इनको क्या करते हैं? Those are known as the basic characteristics. Those basic characteristics include the body form, body form, that body form structure, that include their internal structure, those include the behavior,
behavior. There are also the behavioral characteristics. That means those ancestral characteristics or basic characteristics are more common, basic characteristics, yeah, ancestral characteristics are more common in that large group of organisms which help us in classifying them. को हम उनको कहते हैं, there are the we classify on the basis of the basic characteristics or ancestral classifications. और वो हमें, when we study ancestral characteristics in them, then we get a clue of evolution. And the basic characteristics are ancestral characteristics in a large group, in a group of organisms, and पूरा ध्यान दीजिए इसको समझने के लिए. In a group of organisms there are a set of basic characteristics या ancestral, या यही कहो ancestral characteristics which are very common to this group of organisms, which help us to classify them. Those basic characteristics हम मानेंगे body appearance, body shape, their physiology, and we can say them function and behavior they perform in their habitat. On the basis they get these characteristics from the ancestors, they form the base, and these basic characteristics are not seen in another group of organisms. If this is seen in a group of organisms, say it is a group first, say it is a group first में हमने देखा कि there are certain set of basic characteristics, ancestral characteristics which make them different from the other group, that is group second. जो अब group second होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो group second जो होगा, group second उसमें भी ये basic characteristics because of their basic characteristics या ancestral characteristics, the group 1 is different from the group second. Importantly, the group second shall be different, group second shall be different. जो group second है, obviously it shall be different by the group first in basic characteristics, in ancestral characteristics. We can say if still they are sharing some basic characteristics between the group 1 and group 2, we can say that it is a common ancestry. They have a common ancestry. They have common ancestry. इनमें common ancestry बताएंगे हम. If they share the common basic, अगर इस basic characteristics में they are sharing some 2, 3, 4 basic characteristics, group first is sharing some basic characteristics, ancestral characteristics with the group second, although they look like they're different to each other, but in some cases, in certain cases, if group 1 and group 2 or have some characteristics very common to each other, हमें यहाँ एक evolution का concept मिलता है. The group 1 has descent, group second is descent from the group 1 if there is certain common characteristics in them. Those certain common characteristics tell us about them, tell us about the common ancestry. They have a common ancestry. That means इसको हम कहते हैं there is the connecting links. If there is connecting links because of they have connecting links. They have connecting links between the group 1 and group 2. If they have the
connecting links between the group 1 and group 2. It gives the clue of the evolution takes place, that if there is a group 1, group 2, group 3, group 4, and we can say some certain characteristics are common in them, they are sharing some thing. It gives the concept of evolution. कुछ यहाँ पे हमें दो टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, ये थे ancestral characteristics, ये basic characteristics which have chances to share more and more characteristics in different groups of organisms, which makes them common ancestry. A common ancestry इनमें बनती है, and which I will not tell you that group second is similar to the group 1. They could be different, in various characteristics, but still they are sharing the common characters. Because of this they have the common ancestry. That means there is the connecting links. अब मैं इसके ऊपर एक example दे देता हूँ अभी. I will tell you an example about this. यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखो, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, अगर हम इसमें एक एग्जांपल में मेंशन कर लूंगा, आई विल टेल यू एन एग्जांपल. दैट इज, यू नो द tetrapod vertebrates. You know that in for example the vertebrates, you know the vertebrates, that if I talk about the tetrapod क्या होता है, that they have the 2 pairs of limbs. You know that they have 2 pairs of limbs. So when those animals, those vertebrates which have 2 pairs of limbs are known as the tetrapods. In tetrapods you have seen that in 4 limbs, है ना, 2 pair of limbs हो गए, एक तो 4 limb, 1 pair of 4 limb and another pair of hind limb. तो अगर हम देखेंगे, they have a pentadactyl, that class. They have a pentadactyl class. That means 5 digits class. 5 digits class. They have 5 digits class. So their limbs are pentadactyl. That means they have 5 digits class. तो ये हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स. अब आपको पता है वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस, देखो किस तरह एम्फीबियंस की बात हम कर लेंगे. इफ यू नो द रेप्टाइल्स, इफ यू टॉक अबाउट द एव्स, इफ यू टॉक अबाउट द mammals, although these are the different classes of vertebrates, इनमें देखिए still there is a common feature. What common feature? It is the ancestral, we can say it is the ancestral characteristics. This is an ancestral characteristics that are sharing in the amphibians, reptiles, aves, and this becomes a common ancestry. That means amphibians, that or this characteristics is more common among these following groups. ये इनमें भी होते, they are tetrapods, and that means they have 2 pairs of limbs, and those limbs bear 5 digits class. जिस तरह मेरा 4 limb है ये, it is a 4 limb, my hands, arms. इसमें देखिए आप, इस limb में मेरे 5 digits है, मेरे 5 डिजिट 1 2 3 4 5, इसी को कहते 5. यही मंकी में आप देखोगे, यही बर्ड्स में आप देखोगे, यही आप रेप्टाइल्स में के जो क्लास होता है उसमें देखोगे. पेंटाडैक्टाइल क्लास, दे हैव अ 5 digits class, 5 digits in their class. That it is a very common character
in the following groups. That means it becomes a basic characteristics, yeah, ancestral characteristics in them. With the help of the basic characteristics, yeah, ancestral characteristics help in classifying the organisms. That these organisms, what the common characteristics, they are all the tetrapods. इनको सारों को हम कहेंगे these are the tetrapods. That means tetrapod, they bear the, they have the 5 digits class. तो यहाँ देखिए basic characteristics are more common to them and they help us in the classification and it gives us the clue of about the evolution. That here is the another, we can say here second characteristics on the basis there is the, if there is a major group then there is a subgroups. Subgroups organisms are variable or they show the variation to some to large extent. That means here are the another character basic characteristics. Another is the derivative characteristics. याद रखिए derivative characteristics. Derivative characteristics क्या होता है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो organisms है, organisms हम उनके क्या बनाते हैं, groups of organisms. I will say the groups of major groups of organisms जो बने अब the major groups of organisms उनको क्या करते हैं हम on the basis of derivative. That means ये characters कहाँ से derive हुआ है, here somewhat of variation takes place in them. Somewhat of variation takes place, they have been derived from their basic characteristics. ये खुद basic character से निकला है, तभी तो इसका नाम है derivative, जो किसी से derive होगा. Ancestral characteristics से कुछ variations लाए तो एक character generate हुआ, derivative characteristics, जो इन major groups of organisms में हुआ कि इनसे क्या बने, इनसे बने सब ग्रुप्स. तो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द derivative characteristics there are the subgroups of organisms. आपने देखा होगा कि जो concept classification है, concept classification में एक तो ग्रुप्स होते हैं जो मेजर ग्रुप्स, इसी मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप निकलता है या ग्रुप्स बनते हैं उन्हीं से निकलते हैं सब ग्रुप्स. वो सब ग्रुप्स कैसे बनते हैं, वो सब ग्रुप्स बनते हैं बाय द डेरिवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. डेरिवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो सम वेरिएशन इन द they develop some evolutionary changes. That means derivative characteristics here represent what it represent. Derivative characteristics represents here what is evolutionary change. That means after a long period of time there is a evolutionary change. After a long period of time there is a evolutionary change that accumulate in those organisms. So it to develop derivative characteristics, it takes much more time. It takes a large period of time. It takes more period of time to express in those organisms. तो हम कहेंगे एवोल्यूशनरी चेंज आए उस ऑर्गेनिज्म में, जो अब इस मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक सब ग्रुप ऑर्गेनिज्म में आता है. तो ये सब ग्रुप जो है ये कहां से आया, हमें मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, जो हमें बहुत हजार सालों के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो के बाद एक चेंजेस मॉडिफिकेशंस पाए गए हैं एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स में या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में. तो उन ऑर्गेनिजम्स में आए डेरिवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. डेरिवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिंग्स a necessary change since a long period of time known as the evolutionary changes. जिनके वजह से क्या बनता है, जिनके वजह से एक अलग सा सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते हैं on the basis of the derivative characteristics. It is a representation of it represents evolutionary change.
Here आपको नहीं लगता है on the basis of basic characteristics, ancestral characteristics, chances is much more common in different groups of organisms. याद रखिए इस बात को. और second one is the derivative characteristics which makes necessary changes over a period of time, and new type of species come into existence with different characteristics. असल में क्या होता है, असल में ये एवोल्यूशनरी चेंज है. एवोल्यूशनरी चेंज क्या है? एवोल्यूशनरी चेंज ऐसा कि है जो एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ डिलीट हुए हैं उन ऑर्गेनिज्म्स में, उसके बदले एक रिप्लेसेबल कैरेक्टर आया, एक रिप्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आया. वो हमें किस फॉर्म में आया? डेराइवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में आया, which represents evolutionary changes, which makes the groups, major groups of organisms को हमने कैटेगराइज किया in the system of classification in the sub groups of organisms. तो इस बिना पे हम कह रहे हैं कि there is a evolutionary change. You look, we ourselves look, we have a various वेस्टेजल ऑर्गन्स. वो वेस्टेजल ऑर्गन्स हमने मान लीजिए वो हमने डिलीट किए, अब वो किसी काम के नहीं रहे. बट अगर यही जो हमारा बॉडी हेयर है, अगर हम कहेंगे हम हमारा इन आवर बॉडी देयर आर द वेरियस वेस्टेजल ऑर्गन्स. अगर हम वेस्ट अभी तो हमारे वो रिड्यूस्ड इन फंक्शन है, बट अगर यही हम बात कर लेंगे वेस्टेजल जो ऑर्गन्स है ये फंक्शनल है इन द एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे उनके बजाय हमने एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्ट किया है. आप देखिए जो टेल बोन है, टेल बोन जो होता है इन ह्यूमंस में, ये फंक्शनल है. इन द monkeys, इन द एप्पल्स, देयर इज अ फंक्शनल, दैट इज अ फंक्शनल पार्ट. इन अदर वर्टेब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, उनमें फंक्शनल. बट मैमल्स में इन्होंने क्या किया, इस चीज को इन्होंने डिलीट किया है, या कुछ एक नया कुछ आया इनमें मॉडिफिकेशन. दैट मीन आप देखिए ह्यूमन का जो ब्रेन है, इट इज मच मोर efficient brain, much more functional, and have the intelligence in thinking, in thought, in learning, rather than the other mammals. Or mammals, they have less developed brain in them. That means we achieve some much more characteristics more than other groups of mammals. Then other groups of mammals have common characteristics, but there are some changes, there take place some new changes, new modifications in the ancestral characteristics. Yeah, in basic characteristics there take place changes, जिसके वजह से डेराइवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए और हमें क्लासिफिकेशन में सब ग्रुप्स बनाए गए ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब हम कहेंगे जो सब ग्रुप्स, the organisms in subgroups are different or new in existence. No, they are still pre-existing, they are still the production, they are still the productive of the pre-existing organisms. तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इस चीज को और खुलासा करने के लिए कि एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ देयर इज अ सेल. आप ध्यान दीजिए, जो सेल जो है, इट इज फर्स्ट वन पॉइंट. ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, दैट मीन्स सेल जो है इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल से सिंपलर क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो. गो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी सेल को हमने क्लासिफाई किया. some organisms, because of the cell, some organisms are prokaryotes, they are the prokaryotes. They bear the prokaryotic cell, you know that. Some organisms are the eukaryotes, they have the eukaryote. So cell with the evolution, with our period of time, cell modified. First of all, the most primitive type of cell were the prokaryotic cell. It is the primitive cell which make the organisms
prokaryotes. They have no definite or nuclear material, well-defined cell organelles, but it is a complex. It is a modern. It is a modern complex type of cell. Complex type of cell. Now the cell modified itself over since a long period of time. Modern, it contains a well-defined nucleus, membrane-bound organelle, and they generate the eukaryotes-like organisms. If you tell about the what are the prokaryotes, that are the हमने किंगडम मोनीरा में पढ़ा जिसमें बैक्टीरिया आए, जितने भी बैक्टीरिया है, they are all made up of the prokaryotic cell. That the bacteria are the, it is the ancient type of living organisms, simpler in structure, and they are most primitive on the surface of the earth. With the evolution of the cell, there is the evolution of such organisms, and the cell were the primitive, named as the prokaryotic cell, and exist the prokaryotes. Example is the किंगडम मोनीरा, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं. यूकैरियोटिक जो सेल है, आप देखिए प्रोटिस्टा है, या किंगडम फंगी की बात हम करेंगे, प्लांट या एनिमेलिया की बात हम कर लेंगे. दे आर ऑल मेड अप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स. सेकंड जो है हम जो सेल से जो है, अब इस प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक अगर हम बात कर लेंगे यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोट्स, हाँ, तो यूकैरियोटिक जो है ये किस सेल से बने हुए हैं? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से. वो जो यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल जो है, इससे खुद क्या बने हैं आगे? इससे बने हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है. अब इस यूकैरियोट्स से, जो यूकैरियोट्स जो है, दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल. नाउ सम यूकैरियोटिक सेल आर unicellular, or some are the some eukaryotic cell is multicellular. If the organism come into existence, eukaryotic cell and single in number, unicellular, that is, I talk about the protista. If you talk about the multicellular like organisms, you talk about the multicellular organism as the fungi, Plantae, Animalia. You talk about these kingdoms. अब हम देखेंगे what are the kingdom fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. They consist of the अब देखो with the evolution, with the period of time, how this cell becomes complex in structure, how this cell is now known as the eukaryotic cell, and modern type of cell, complex in structure, gives the existence of the unicellular organisms named as the protista, and gives the existence of multicellular organisms in the 5 system kingdom of classification, kingdom fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. आगे हम देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर के बिना पे हम देखते हैं. फिर इन ग्रुप्स ऑफ, इन किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो भी है, किंगडम प्रोटिस्टा हो, किंगडम फंगी हो, किंगडम प्लांट या किंगडम एनिमेलिया, हमने फिर देखा इनमें विद कॉन्सेप्ट ऑफ इन व्यू आपको लेना है एवोल्यूशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फिर हम ये फीचर इनमें स्टडी करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर वी कैटेगराइज सम एनिमल्स इन ऑटोट्रॉफ्स. वो हमने किंगडम फंगी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा को कैटेगराइज किए. कुछ ऑटोट्रॉफ्स निकले, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स निकले. जो ऑटोट्रॉफ्स है इनमें ये फोटोसिंथेटिक है, शाबाश, फोटोसिंथेटिक है, और कुछ इनमें क्या निकले, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक. आप देखो यहाँ जो हम क्लासिफाई करते हैं
different organisms को on the basis of the evolution. Every living organism has been existing from the pre-existing organisms. यही हमें belief है कि प्रोकैरी जो autotrophs है, they are the photosynthetic in nature, and some are the heterotrophs, they have the they are non-photosynthetic. आप देखिए इसमें अगर हम कर लेंगे प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटे आप किंगडम प्लांटे, या इसमें देखिए आप इसमें आएगा फंगी, इसमें आएगा ये एनिमेलिया। आप देखिए ये दो किंगडम्स इसमें हम प्लेस कर लेंगे। इसमें वो हमने देखो कि किस तरह फिर सेल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गई, जिसको हमने कहा कि यूकैरियोटिक टाइप सेल के किस तरह फिर उसने यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट करा है, किसने उससे कैसे मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट हुए हैं। फिर बाद में हमने एक फ्यूचर इनमें डिस्कस किया है, तो कौन जो ऑटोट्रॉफस, इसमें कुछ रहे हेटेरोट्रॉफस, नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो फिर इनके बाद हमने और एक पॉइंट बेसिस पे हमने क्या कहा कि जो स्केलेटन है इनमें कुछ एक कैरेक्टर है, दैट इज अ स्केलेटन बेसिस पे दे आर ऑफ टू टाइप। One organism is with the exoskeleton, खासतौर हमने देखा ये किसका है, इनवर्टेब्रेटस के फीचर है। ज्यादातर इनवर्टेब्रेटस देयर इज occurrence of exoskeleton and endoskeleton. Endoskeleton it is a unique feature खासतौर हम कहेंगे इनमें एक्सोस्केलेटन इन द वर्टेब्रेटस को हम कहेंगे जो एंडोस्केलेटन है, धीरे धीरे इन्हीं से एक एंडोस्केलेटन एग्जिस्टेंस में आए। एक मिनट इन्हीं में से एक मतलब एंडोस्केलेटन नाउ adapted by the vertebrates, that vertebrates adapted the endoskeleton, and this exoskeleton modified into the endoskeleton. It is much more prominent and much more functional in vertebrates, and vertebrates are strong, they are very tough against any pressure, any force, rather than the invertebrates. They are more delicate, flexible, because of only having the exoskeleton. That means exoskeleton is the most primitive type of system, and endoskeleton is a modified form of the endoskeleton is a modified form of the exoskeleton. So on the basis you might have believed that there is a evolutionary relationship in living organisms. Every living organism with new modifications, with verifications, ensure that their existence takes place from the pre-existing organisms. With the help of this concept, I discussed that how we can understand the concept of evolution and classification. Dear students, now B part is here. With the help of the homologous, it is the homologous organs. With the help of the homologous organs, we can there is a evolutionary relationship, that with the help of this methodology, it is one of the another methodology. With the help we can believe in that there is a evolution takes place among the living organisms, and evolution is always from simple to the complex in nature, in existence. That homologous organ क्या है? ये वो organ होते हैं जिनमें क्या है, they have common basic origin जो होता है, origin and basic plan जो बनावट होता है इस organ की,
जो बेसिक प्लान होता है ओरिजिन, वो क्या होता है, वो कॉमन है और it is found in different organisms. It is found in different organisms जिनके आप जो वेरी करते हैं आपस में, इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, जिसका ये वो ऑर्गन है जो स्ट्रक्चर लिहाज से वो सेम है, दे हैव सेम बेसिक डिजाइन, दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, but perform the different functions, but function is different, but function is different, but they perform the different functions. If you take the example of the four limbs in vertebrates में आप देखिए, you take the example of four limbs, उसमें क्या होता है, they have the इसमें similar basic structure होता है, वो basic structure होता है, but function is but perform different function, different functions. When they perform different functions, have the basic structure in, as the example is the four limbs in vertebrates, they have a origin and basic plan is common, yeah, similar, and they perform, and it is found in different organisms. No doubt that if we talk about the four limb of frog, four limb of reptiles, four limb of the mammals, man, human, four limb of the, we can say, the bird, दे हैव डिफरेंट. बर्ड का जो फोर लिम्ब होता है ये फ्लाइंग में इस्तेमाल होता है. जो मैन का, जो आदमी का, ह्यूमन का जो फोर लिम्ब होता है, दे हेल्प इन द ग्रिपिंग, इन कैचिंग, इन ईटिंग, in feeding itself with the help with the arms, in writing, and as we can say the four limbs in the frog, in swimming, in hooping, locomotion में भी वो terrestrial help करता है to walk on the ground. ऐसे कि देखेंगे हम रेप्टाइल्स में भी वो चलने फिरने में इस्तेमाल करता है. तो हम देखते हैं कि इनका डिफरेंट फंक्शन है. हाँ, दे आर अडेप्टेड फॉर डिफरेंट फंक्शन, बट द बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान, द बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन इज common, is common in sharing, is common in origin. That I will show here with the help of this organ how with this. नहीं तो अलग अलग अगर हम देखेंगे क्लास एम्फीबिया, क्लास हम रेप्टिलिया, क्लास हम देखेंगे एवस, मैमलिया क्लास में देखेंगे, जो होमोलॉगस ऑर्गन है हमें इससे क्लू मिलता है. अगर इनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर फोर लिम्ब का सेम है, डिजाइन सेम है, बट काम का अडेप्टेड डिफरेंट है. दे हैव डिफरेंट अडेप्टिव फीचर्स, दे हैव डिफरेंट फंक्शनली, ये डिफरेंटली अडेप्ट है, अलग अलग इनका काम है. घोड़े का जो, हॉर्स का जो, वो मैमलिया से बिलोंग करता है, क्लास मैमलिया, हॉर्स, इट हेल्प्स द फोर लिम्ब इन रनिंग, वॉकिंग. दैट मीन्स अगर हम देखेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, if I have a four limb of the man, यहाँ पे देखिए फोर लिम्ब, अगर हम फोर लिम्ब मैन का देखेंगे, यहाँ देखिए आप फोर लिम्ब इसका, यही फोर लिम्ब आप देखिए, ये मैन का फोर लिम्ब है, ह्यूमन का जो है ये उसका फोर लिम्ब है. इट इज द फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्ब. आप देखिए स्ट्रक्चर, दिस humerus bone, ulnar radius bone, there are the carpals, and there are the phalanges, 1 2 3 4, and this is the fifth one, phalanges, 5 digits class.
That if you take the of the you can say the reptilia. If you take the reptilia, you see that here रेप्टिलिया में आप देखिए इसको, तो वहां पे आप उसमें देखिए ये आप देखिए ये रेप्टिलिया का 4 लिम्ब है। आप देखिए बनावट तो सेम है। दिस इज द ह्यूमरस बोन इन रेप्टिलिया। ह्यूमरस बोन इन रेप्टिलिया में देखिए आप ह्यूमरस बोन कैसे डिजाइन हो गई है इसमें। रेप्टिलिया में ह्यूमरस बोन, दिस इज द ह्यूमरस बोन and same one is the humerus bone AA, and there is the radus, there is the ulna, there is the ulna, there is the radus, it is the radus bone, this is the ulna, this is the humerus bone, humerus bone, upper arm bone, this is also the humerus, this is also the here the radius, this is ulna. There are the carpus, carpus, metacarpus, these are the phalanges. इसमें देखिए 5 डिजिट्स है, इसमें 5 phalanges और 5 नंबर phalanges है, इसमें भी 5 नंबर phalanges है। इनमें देखिए carpus, meta, that means there is a basic design plan, but it is adapted for crawling, for wading in a water, for gripping, it is used for walking. This forearm is not used by human forelimb is not used for crawling, walking, wading in water. It is adapted for eating, for catching, for writing, for various purpose. That means how their function is, of course, homologous organs are different in function, they are different in adaptive in function, but the structural plan, basic plan is the similar. As we talk about the birds, they have similar basic structural feature, structural design is the same. Homologous, homo means similar, similar organs, these are the similar organs in structure. Homous, logous structure, they have a similar structure, they have similar structure, but their work is different. That means it is one of the evolutionary, it is one of the evolution evidence to us. There is a evolutionary, it gives us evolutionary relationship. If this reptilia become it belongs to one class and it becomes to another class, but still they are sharing the same character. This I will say that it is the ancestral characteristics. अभी discuss इससे पहले चल रहा था ancestral characteristics. This is the basic characteristics. They still are these. They still are exchanging. These still are exchanging the characters. And we will move ahead that with the help of the homologous organs. That organisms have similar basic structure, but they look different. They perform different functions with these 4 limbs. If we talk about another example is the I will tell you that that human teeth जो है, और आप देखिए ये elephant's tusk जो होता है, वो देखिए वो भी होमोलॉगस का एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप देखिए जो होमोलॉगस ऑर्गन है, द स्टडी ऑफ अबाउट द होमोलॉगस ऑर्गन, while to study this relationship, when we study the relationship in view of the homologous organs, it is known as the homology, या इसको कहते हैं हम divergent
it is a divergent evolution. It is known as the divergent evolution. When we study the when we study the homologous organs, and it is present in different groups of organisms which have same basic structure, which have same basic internal structure, but they perform different functions in their habitat, in their surrounding. They perform different functions, they are adapted for different functions. That is a homology, and it is a divergent evolution. And this type of, if we study the evolution in view of the study of the homologous organs, it gives us an evolutionary relationship. Now further, there is a C part here. There is the analogous organs. एनालॉगस जो ऑर्गन्स है, इनमें क्या हमने देखा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान. दे हैव डिफरेंट प्लान, होता है डिजाइन भी, डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान, बट सिमिलर फंक्शन. इनका सिमिलर फंक्शन रहता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. In different groups of organisms, we say that such analogous organisms, they are antagonistic organs or antagonistic. They have no they are not similar in structure. They are not similar. These organs are not similar in structure, similar in design. They are different, and they have a similar, they have a common function. If you take the example of the wing of butterfly, if we take the example of wing of butterfly, and you take the plus example of wing of bird, दोनों का क्या काम है, दोनों का सिमिलर फंक्शन है. दे यूज दीज ऑर्गन्स फॉर द फ्लाइट, उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये ऑर्गन्स, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. अगर हम देखें, बट स्ट्रक्चर इन देम इज स्ट्रक्चर डिफरेंट है. स्ट्रक्चर जो इनका बेसिक इन ऑर्गन्स में जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, they have lot of difference but perform the similar function. इसका मतलब है कुछ जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स है, बटरफ्लाई और द इंसेक्ट्स, हाँ, वो क्लास इंसेक्टिया से बिलोंग करते हैं. इनवर्टेब्रेट है, लिटिल क्रिएचर है, लिटिल छोटा सा एक जानवर है, छोटा सा, सिंपलर इन स्ट्रक्चर. आप देखिए बर्ड एवस क्लास से बिलोंग करता है, वर्टिब्रेटस है, कि किस तरह उन्होंने सीखा है, किस तरह उन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर को, फोर लिम्ब को मॉडिफाई किया है बटरफ्लाई के विंग से, बराबर वो डिजाइन हुआ है. स्टिल देयर इज एवोल्यूशन, देयर इज सम कैरेक्टर विच आर स्टिल शेयरिंग from the simplest organisms to the complex organisms. Still there is the sharing of characteristics in a functional way. In a functional way, you say that it is a butterfly here. This is the butterfly here, and you say, you might have noticed the wing in the butterfly here, wings. The butterfly how perform the wing. This butterfly, or you take the example of the wing of the bird. It has a solid, it is a humerus bone in the bird. It is of humerus bone, and there is the radius bone.
There is the ulnar bone in them birds. Let's come about the wings. How this wing in a bird, how it has been modified in the wings, how it has been modified in bird, how it has been modified in the wings. अब देखिए इसका जो विंग है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये इनमें बोन्स नहीं होते हैं. देयर आर द काइटिनस सब्सटेंसेस एज एक्सोस्केलेटन दिस विंग इज मेड ऑफ. बट यहाँ पे देखिए इट इज अ सॉलिड टाइप ऑफ बोन. दे हैव फेदर्स इन देम. जो इसका मतलब इंट्यूगमेंट होता है, स्किन जो होता है, मेड अप ऑफ द फेदर इज एक्सोस्केलेटन. दैट मीन अगर हम इंटरनल देखेंगे, there are bones, they are made up of the solid bones, humerus bone, ulnar, radius bone, phalanges, and यहाँ देखिए कि किस तरह फिर यहाँ पे इन्होंने एक फेदर डेवलप किया है इस अपना फोर आर्म पे, एंड मॉडिफाइड फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द विंग. बट if there is a difference in this is at A, it is a B. If the two different organism, it is the insect, butterfly आप देखो वहां पे ऑर्गेनिज्म में किस तरह डिफरेंट. ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. बट दे बियर द, इसने वैसे ही फोर लिम्ब को मॉडिफाई किया है जिस तरह एक पंख होती है एक बटरफ्लाई में. बट कॉमन फंक्शन, but the different body plan, but different in body structure, but function is similar. Function is similar. They are adapted for the similar function. Function is to fly high in the sky. Both the organ, that it is the evidence of, it is another evolutionary relationship there is by means of analogous organ. If we study the analogous organs in order to understand the evolutionary relationship, this is known as the analogy इसको कहते हैं हम. और convergent इसको कहते हैं हम convergent evolution. What is convergent evolution? The study of analogous organ in order to understand the evolutionary relationship of different groups of living organisms is known as convergent evolution or analogy इसी को कहा जाता है. Now there is another vestigial organs. With the help of the vestigial organs, the concept of here the vestigial organs. With the help of the vestigial organs in human body, there are 180 vestigial. Sorry, there are 100 vestigial organs. 180. I have remembered few vestigial organs. Vestigial, GIAL, vestigial organs that you have the in vestigial organs क्या होता है? They are reduced in function in organisms, but functional, याद रखिए, but functional in their जो इनके ancestors थे, but function in their ancestors, जो इनके बाप अजदाद थे उनमें ये काम करते थे उन organs और important हुआ करते थे. but जो अलग इनसे organisms निकले अब उनमें ये क्या बने? reduced. अब इन्होंने काम करना छोड़ दे. They becomes now vestigial, wasteful at all. They are now not in use. Those are the vestigial. Presence of vestigial organs
in human body there are various vestigial organs. With the help we believe that खुद ह्यूमन जो रेस है इनकी एग्जिस्टेंस हुई है फ्रॉम द मॉन्कीज एप्पल्स से। तो एक एवोल्यूशनरी एक बिलीफ है, एवोल्यूशनरी एक एविडेंस है। विद द हेल्प ऑफ दिस वेस्टेजल ऑर्गन्स दे वर फंक्शन इन देयर एंसेस्टर्स, but in an organism these days it becomes reduced in function and now is a wastage. I will name some vestigial organs in human body. Is the nictitating membrane in eyes। जो यहाँ पे हमारा रहता है ये मेम्ब्रेन फ्लैशी पार्ट कोने में रहता है यहाँ पे nictitating membrane and body here जो हमारा it is a one body here abdominal muscles या हम कहेंगे ear muscles जो कान के मसल्स होते हैं। अब ये वेस्टेजल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है, बट मॉन्कीज में एप्पल्स में इट हैव अ ग्रेट जॉब। they move their ears, they make a movement in their ears, they have the importance of ear muscles in the apples in the monkeys। and you have a tailbone जो है हमारे में जो टेल बोन होता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में जो लास्ट बोन होती है इसको हम कहते हैं कॉक्साइज जो बोन है टेल बोन, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द एंड देन इज द थर्ड मोलर विजडम मोलर। थर्ड जो हमारा लास्ट में आता है आफ्टर द एज ऑफ 23-24 इट इज द थर्ड मोलर विजडम। थर्ड मोलर विजडम टीथ वो भी वेस्टेजल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है। इसमें कैनाइनस जो हमारे नोकेली टीथ होते कहते हैं कि ये भी, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। These are the various examples of the vestigial organs. Still they are in the organisms associated with the organism with humans. These are still organs. They give us this gives us evolutionary relationship that we have itself. We have descent from the other organisms. We have descent from our ancestors जिनमें ये organs हुआ करते थे और बिल्कुल उनमें ये फंक्शनल अभी भी है, बट इनका आज बॉडी में होना या ना होना एक ही बात है। तो ये नाउ दे बिकम द नॉन फंक्शनल। इनको स्टडी करना, टू स्टडी अबाउट द वेस्टेजल ऑर्गन्स इन द ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर वेल डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर्स। नाउ they are not at all functional to us, in us. They are vestigial organs in us and they are of no use. When we study such vestigial organs, number of vestigial organs in a newly developed organisms, it helps us, it makes a link that we have a somewhat link with our ancestors, with our pre-existing organisms, and with the help of with the study of such organisms. Dear students, it is all about this topic, methods of tracing the evolutionary relationship. I hope you understand about this. Now in the next lecture I will inshallah discuss the E part of it.
इस उसके ई पार्ट में मैं डिस्कस करूँ fossils, how the study of fossils have another lead to the concept of evolution, and there is a evolutionary relation. Thank you very much.